Good evening to all of you. Is this audible? Visible to all? All clear? Everyone joined? Hello, very good evening. Subhasis, Pihu. How are you all? POJ ପାଇଁ I think ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି already ବୋଧେ POJ ପାଇଁ. ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? All good? ବହୁତ ବଢିଆ. ଠିକ ଅଛି. So ଗତ କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ. Now last 3टा क्लास बोधे समस्ते जॉइन करि नथिले. मे बी कम्युनिकेशन मिसमैच नहीं कम्युनिकेशन मिसमैच और समस्त पाखे मे बी नोटिफिकेशन पहुंच पारे कि अगेन वी रिज्यूम्ड आवर क्लास. तो दीटा छोट छोट क्लास ही से रखी एंड मोस्टली जो जो टॉपिक हम डिस्कशन करथिले जस्ट रिकैप ऑफ द सेम टाइप ऑफ टॉपिक तार ऊपर ही मु रिवॉल्व करथि लास्ट 2 सेशंस यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे. टुडे आई एम हैविंग अ सेशन ऑन नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ऊपर आज हम डिस्कशन करिया. आर यू रेडी? एवरीवन रेडी? ओके ग्रेट. ओडिशा पार्ट आई विल कवर, डोंट वरी. ओडिशा पार्ट जहाँ जहाँ अच्छी ना हमें सब कवर करिया. व्यस्त होनी चाहिए. ठीक है. सो लास्ट क्लास वी हैड अ डिस्कशन ऑन एक्सटर्नल सेक्टर. नुहे कि एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेड या ऊपर हमें डिस्कशन करथिले. नो आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि हमर नेशनल इनकम सहित ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये टॉपिक हम आज डिस्कस करिया. बहुत बढ़िया एवं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक. थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम एथरो क्वेश्चन आसी थाए. नाउ जस्ट अ ब्रीफ I will come to the history of national income in India, then I will directly come to national income account. फर्स्ट आम हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम देखिए, तापर आस नेशनल इनकम अकाउंटिंग को केमती नेशनल इनकम अकाउंटिंग करा जाई पारिबो. सो जेमती आम गोटे लोकर इनकम कैलकुलेट करछि इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ द होल नेशन. कौन कर परिबे सेही हिसाब रे होल नेशन एंटायर नेशन ना इनकम कैलकुलेट कर परिबे. ताले इंडिया रा हिस्ट्री कोन दादाबाई नारोजी आनिले 1868 रे फर्स्ट टाइम पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कले एंड इट वाज एनुअल इनकम केते एनुअल पर कैपिटा इनकम 20 रुपीस. 1931-32 रे फर्स्ट साइंटिफिक मेथड इट वाज यूज्ड बाय डॉक्टर वीके आरवी राव. फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इट वाज बाय पीसी मालनोबिस. एवं 1995 रु सीएसओ द्वारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग होतला. 2019 रे सीएसओ सहित एनएसएसओ मर्ज हे गले टू फॉर्म एनएसओ. To form NSO. Now this is the history. Here. Now this is the history of national income accounting in India. So I already 1931-32 first scientific method by Dr. V.K. R.V. Rao. He divided the economy into two parts. Entire economics से दी भाग रे divide कले से समय service sector नथिला. Only two sectors. Only two sectors were there. Sound from our mic use करछि. Now clear? एबे साउंड हला डबल माइक यूज करछि. आई थिंक साउंड आस्थिबो क्लियर साउंड. So he divided economy into two parts. कौन कौन ना प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. देयर इज नो टर्शियरी सेक्टर.
कहीं टर्शियरी सेक्टर से समय नथिला so he computed per capita income as ₹62 then Dr. Gadgil and VK Rao देखले एटा फर्स्ट रिपोर्ट it was presented in 1951 ये कहला कि as per this one national income of India is for 1948-49 it was 8,710 rupees केते कहले it is 8,710 rupees so National Statistical Office it was created under Ministry of Statistics and Program Implementation in 2019 in 2019 it was created dita tक मिश्री वाले की CSO एवं NSSO ये मिश्ला वाले मिश्ला पर कौन क्रिएट कले ना ये क्रिएट कले NSO then National Statistical Commission this is an autonomous body formed in 2005 under recommendation of Rangarajan Committee. Under recommendation of Rangarajan Committee. So there are three sectors. It decide to divide kala kete economy ko tinita sector re divide kala primary sector, secondary sector and tertiary sector. Tinita sector re divide kala primary, secondary and tertiary sector. So primary sector re kya asle na agriculture, forestry, fishing ye sabu. Secondary asle mining, quarrying, manufacturing, electricity, gas, water supply, construction. Tertiary asle किए ना ट्रेड होटल ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फाइनेंशियल रियल एस्टेट this was the tertiary sector. Now see this is the sector wise contribution of GDP. I'll give you a comparative approach. It comparison देखो primary sector contribution 50% थिला now reduce होई कि 2021 में थिला 19% 55% to 19% को reduce होगला. Secondary sector 15% थिला increase होई 28% को tertiary sector 30% थिला increase होई 53% को. तार जति क्वेश्चन आसीबो which sector contributes largest to the national income or GDP ताले आंसर कोन हो. यदि क्वेश्चन आसे which sector contributes largest to the national income or GDP ताले आंसर कोन हो. समस्त करि परिबे कि नै सर्विस सेक्टर करि परिबे. सर्विस सेक्टर यदि क्वेश्चन आसे प्राइमरी सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन जीडीपी को रिड्यूस होउची यदि क्वेश्चन आसे प्राइमरी सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन जीडीपी को रिड्यूस होउची ताले करि परिबे कि नै समस्त आंसर यस हो. ताले डायरेक्टली आसुछि मु नेशनल इनकम कैलकुलेशन को इजीली बुझेबे और जल्दी जल्दी बुझिबा. Now in the economy there are four contributors. चारिटा contributors सन कि individual or household, business firm or investor, government and foreign nationals. इजी कैलकुलेशन पाई मु केवल एटी इंडिविजुअल एवं बिजनेस फार्म को कैलकुलेट करिवि गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल को कैलकुलेट करिविनी. कोन कहली गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल को एटी कैलकुलेशन करिविनी. ओनली फॉर इजी कैलकुलेशन आई विल कंसीडर इंडिविजुअल एंड बिजनेस फार्म. हमें पढ़िथिले ऑलरेडी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर तक जे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गोटे फैक्ट्री चलिया पाई हमको कोन दरकार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमको दरकार लैंड हमको दरकार एठी लेबर हमको दरकार कोन ना कैपिटल एवं हमको दरकार एंटरप्रेन्योर. कोन कहले हमको दरकार एंटरप्रेन्योर. ये चारिटा फैक्टर हमको दरकार. दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ताले ये चारिटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए दिए गोट साइड नेले हाउसहोल्ड गोट साइड नेले बिजनेस फार्म. हाउसहोल्ड दबो बिजनेस फार्म को कोन ना हाउसहोल्ड बिजनेस फार्म को दबो लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. कौन कहली ये दबो हाउसहोल्ड बिजनेस फार्म को कौन दबो ये प्रोवाइड करियो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर. देन या बदल रे लैंड बदल रे ताकू मिलिबो रेंट, लेबर बदल रे मिलिबो वेज, कैपिटल बदल रे मिलिबो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर बदल रे मिलिबो प्रॉफिट. बुझला लैंड बदल रे रेंट, लेबर बदल रे वेज, कैपिटल बदल रे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर बदल रे मिलिबो प्रॉफिट. एटा किए दबो काहा को दबो एटा बिजनेस फार्म दबो काहा को ना हाउसहोल्ड को काहा को हाउसहोल्ड. ताले बुझियो को चेष्टा करंतु ए जो रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट मिलुची नाउ दिस इज इनकम फॉर द हाउसहोल्ड. ये हाउसहोल्ड को इनकम मिलला एंड दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म. कौन कहली ये बिजनेस फार्म पई एक्सपेंडिचर कि नै मते कौन कहली ये ला दिस इज इनकम फॉर हाउसहोल्ड एंड दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर दिस इज इनकम फॉर हाउसहोल्ड एंड दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस फार्म. इज दिस क्लियर? हाँ मु कहली मार्केट को गोटे प्रोडक्ट किन के गोटे पेन किन के 20 रुपीस. नाउ दैट 20 रुपीस इज एक्सपेंडिचर फॉर मी and for the business owner, for the shopkeeper 20 rupees is the income. So my expenditure is equals to his income. Is this clear? My expenditure is equals to his income. So one person's income is equals to another person's expenditure.
एक्जाक्टली सेम जिनस एटी होची rent plus wage plus interest plus profit. This is income for whom? Income for the household, and the expenditure for whom? Expenditure for the business firm. Is this clear? Or this is expenditure for the business firm. बुझिएगला ताला हम एटी कोन बुझले ताले इनकम नेशनल इनकम को केमती कैलकुलेट करि परिबा नेशनल इनकम को मु फर्स्ट मेथड रे कैलकुलेट करि परिबा इनकम मेथड जदी भारत रे समस्त इनकम को ऐड कर दोची ताल मते मिलिबो इनकम मेथड सेमती जदि समस्त एक्सपेंडिचर को मु कैलकुलेट कर दोची ताल मते सेकंड मेथड मिलिबो कोन ना एक्सपेंडिचर मेथड बा कंजप्शन. The first is income method, the second is expenditure or the consumption method. बुझेला कौन कहले first is income method and the second one is expenditure or the consumption method. है ना clear? Next आ गोटे एंगल को देखियो नाउ आमे हाउसहोल्ड जो फैमिली अछि फैमिली गुडा का हाउसहोल्ड हमको कोन दरकार ना डे टू डे बेसिस रे प्रत्येक दिन हमको कुछ ना कुछ कंजप्शन दरकार चूड़ा चीनी चावल आमे जहां भी किनुचे तो तार वैल्यू केमती बाहर करबी ना क्वांटिटी इनटू प्राइस कोन कहली क्वांटिटी इनटू प्राइस बाहर जो तार वैल्यू हैला तो एटा हला कोन कहली क्वांटिटी इनटू प्राइस कैलकुलेट कला हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर नाउ दिस वैल्यू इज कहां पे एटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वांटिटी इनटू प्राइस नाउ एटा होची दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर हाउसहोल्ड को बिजनेस फार्म दोची गुड्स एंड सर्विसेज हमको जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज डेली दरकार के दबो बिजनेस फार्म ता बदल रे हमें ये एक्सपेंडिचर का कहू दो ना बिजनेस फार्म को तो माने आउ गोटे मेथड मते मिलिला नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया पई एंड दैट मेथड इज नोन एज ऑन कहले से मेथड को दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट और आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड कौन कहले दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड क्लियर ताहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करिवार केतेटा मेथड हला टोटल देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम आउ किछि कांसेप्ट को आसीबा इज दिस क्लियर ना डाउट अछि 3 methods very good now देखिबा हमें is this your correct name or you have changed your name Pihu is it your original name my daughter's name is also Pihu मुझे ना भी Pihu anyway so देखियो next concept को आसीबा आ गोटे concept को आसीबा gross and net gross और net कोन गोटे simple concept okay Brindavan fine gross और net गोटे concept को आसीबा gross कोन और net कोन ये concept हमें सुनिचे पूर्व ये concept हमें सुनिचे पूर्व gross और net for example हम गोटे पैकेट मगैले गोटे पैकेट let's say you purchase a packet of गोटे किछि पैकेट मगैले से पैकेट भितरे हमें देखिले 5 केजी होछि से पैकेट वेट ता ता भितरे प्रोडक्ट अछि से बॉक्स ता आउट पे टोटल वेट होछि तार लेट्स से 5 केजी एवं बॉक्स रो वेट ता भीतर जो बॉक्स अछि से बॉक्स रो वेट केते ना लेट्स से 500 ग्राम है ना बॉक्स रो वेट केते बॉक्स रो वेट माने कर 500 ग्राम ताले फिर एक्चुअली प्रोडक्ट केते रहिला ना प्रोडक्ट ले 4.5 केजी प्रोडक्ट केते रहिला ना 4.5 केजी बुझियला टोटल वेट 5 केजी बॉक्स रो वेट 500 ग्राम तो आको कोआ जाय दिस इज द ग्रॉस वेट 5 केजी एटा होची कोना दिस इज द gross weight now ये जो 500 ग्राम रहला एटा कोन this is the depreciation जो 4.5 kg रहला एटा कोन this is the ताको कोन नेट वैल्यू बा नेट वेट तला हम एटी गोटे फार्मूला सिखले gross minus depreciation is equals to net कोन सिखले एटी फार्मूला gross minus depreciation is equals to net ये कांसेप्ट समस्त बुझी गले कोन कहली gross minus depreciation is equals to net समस्त बुझी गले आ गोटे कांसेप्ट को आसी
फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस मन कर ये पेन को मु मार्केट रो किनी 20 टंका सो ये मो पाई केतना मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 20 रुपीस एंड दिस इज द प्राइस दैट कंज्यूमर पेज कंज्यूमर जो प्राइस ता दिए ताको कोन दी कंज्यूमर जो प्राइस ता दिए ताको कोन कोन दी दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस नाउ ये पेन तैयारी करियो केतना खर्च होइतिबो लेस देन 20 ऑब्वियसली पेन तैयारी करियो को लेस देन 20 ऑब्वियसली सो लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर ये चारिटा फैक्टर मिसले क्रिएट हो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कौन कहली लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये चारिटा फैक्टर मिसले क्रिएट हो इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 20 लेट्स से दिस इज 12 रुपीस लेट्स से दिस इज 12 रुपीस हैला एंड दिस इज 20 रुपीस नाउ प्रॉफिट एठी ताले केते हला तार प्रॉफिट हला केतना 20 minus 12 हला केतना 8 20 minus 12 हला केते 8 आको कहा जाय दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स एटी प्रॉफिट भी मिसिक अछि दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स तो एठी हम बुझिले फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट एठी केते 12 रुपीस इनडायरेक्ट टैक्स 8 रुपीस मार्केट प्राइस केतना 20 रुपीस 12 plus 8 is equals to 20 कौन कहली 12 plus 8 is equals to 20 rupees clear next point question ताल जदी एते जिंस अछि आ गोटे हमको मार्केट रे चाउल मिल जाउची बीपीएल जो माने बिलो दी पॉवर्टी लाइन एमान को राइस मिलुची केते ना 2 रुपीस पर केजी नाउ क्वेश्चन इज गोटे केजी चाउल तयारी करिया पई कोन 2 टंका खर्च होउची गोटे केजी चाउल तयारी करिया 2 टंका खर्च इज द फैक्टर प्रोडक्शन 2 रुपीस पर केजी नो एब्सोल्युटली नो तो एटी गवर्नमेंट कोन करची ना लेट्स से फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20 रुपीस गवर्नमेंट एठी सब्सिडी होची 18 टंका एवं एठी कोन मिलला हमको मार्केट प्राइस केते ना 2 रुपीस तले एठी गोटे नुवा फार्मूला हम सिखिले कोन देखिले ना फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस दीटा फार्मूला जानिथिना हम एठी गोटे फार्मूला पाइथिले एठी गोटे फार्मूला पाइथिले फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू देखो गोटे फार्मूला पाइथिले फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस आ गोटे पाइले कोन फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस मन कर ए दीटा को हम मिसई देबा मिसेले कोन ना फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ये हलो कोन ना फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ता को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कौन कहली प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तब कौन कहते प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दिस इज इक्वल्स टू एनआईटी हैला नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स इट कहलो एट जो सेतो बिक्री करियो बिक्री ऊपर टैक्स देबो कि नहीं मे बी जीएसटी दो बा जो समय जहा थिबो सर्विस टैक्स दो वैट दो जहा भी थिबो सेल्स टैक्स दो तो सेही टैक्स तो कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स रे काउंट कर that tax is calculated in indirect tax clear yeah so it gives you factor cost plus NIT is equals to market price एबे आसी हमें प्रोडक्शन मेथड रे देखियो फर्स्ट मेथड कोन प्रोडक्शन मेथड रे फर्स्ट मेथड हमें देखियो जीडीपी हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी कोन कहली केमति जीडीपी कैलकुलेट करा जाउची देखियो ग्रॉस जीडीपी रो फुल फॉर्म कोन के कोइ परिबे जीडीपी रो फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट केतरा कीवर्ड कहबी कीवर्ड बुझले बुझिबे नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड कौन कहली ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ताले एटे बुझियो फाइनल गुड्स कोन एंड फाइनल सर्विसेज कोन
एग्जांपल हिसाब रे बुझेबी बुझिबे ऑन दे मन कर हम गोटे कार किनुचे जो कार रो वैल्यू केते ना 5 लाख टका केते कहली जो कार रो वैल्यू है 5 लाख टका जैसे ये कार जो चक्का अच्छी चारटा चक्का ये चारटा चक्का वैल्यू 20,000 आम कौन एक्सट्रा 20,000 दौचे 20,000 इज इनक्लूडेड हियर एक्सट्रा पेमेंट करूने कार किनला बट आम गाड़ी खराब हो गला एवं गाड़ी खराब हैला परे आम कौन कले ना व्हील किनिले आउ तो एठी हमें 20,000 रुपीस हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करने को मिलूँ कौन करिया को मिलूँ 20,000 रुपीस हमको एक्स्ट्रा एठी पेमेंट करने को मिलूँ बुझिला ताले एई जगह रे आको कह जाय फाइनल गुड्स जोटी पेमेंट करूछंती दैट इज फाइनल गुड्स जोटी पेमेंट करूछंती फाइनल गुड्स जोटी पेमेंट करू नाहंती दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स कौन को जोटी पेमेंट करू नाहंती त कोंदी कोन इंटरमीडिएट गुड्स ताले गोटे कहली फाइनल गुड्स आ गोटे कहली कोन ना इंटरमीडिएट गुड्स इज दिस क्लियर नाउ व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स मैं क्वेश्चन करो सर गुड्स तो पूछे गला सर्विस कौन फाइनल सर्विस कौन और इंटरमीडिएट सर्विस कौन नाउ फाइनल सर्विस की और इंटरमीडिएट सर्विस की लेट्स टेक एन एग्जांपल कोन गोटे मेडिसिन स्टोर जाउछ ब्लड प्रेशर मेजर करियो तो 20 टका दउछ फर्स्ट इंस्टेंस सेकंड इंस्टेंस गोटे प्रोफेसर पाखो कंसल्ट करिया पे जाउछ प्रोफेसर कंसल्टेंसी एटी ता फीस केते ना 1000 रुपीस प्रोफेसर पाखो जिबा पूर्वरु जने अटेंडेंट रहिबे जे कोन करिवे एठी जने अटेंडेंट रहिबो जे कोन करबो ना जे तोर बीपी मेजर कर देबे एठी लिखि देबे SpO2 मेजर करके सब लिखि देबे ना या पई हमका एक्स्ट्रा पेमेंट किछि करिया पड़ो कोन कहली या पई आउ किछि एक्स्ट्रा पेमेंट करना दिस पेमेंट इज इंक्लूडेड हियर 1000 अब बीपी पई आउ 20 टका एक्स्ट्रा नाउ SpO2 मेजर पई आउ 20 टका एक्स्ट्रा वी डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा नाउ दैट इज इंक्लूडेड इन 1000 रुपीस बुझिला सो जो बीपी मेजर कले हमें this is a final service and this is intermediate service बुझेला मो कथा इंटरमीडिएट कोन और फाइनल कोन हैला व्हाट इज हैंडराइटिंग अच्छा हो तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जीडीपी कैलकुलेशन ने ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज only final goods and services they are considered. The next is within the boundary of a country. Boundary of a nation means now समझते this is the geographical boundary. या व्यतीत मन कर किछि यूएसए रे गोटे इंडियन एम्बासी अछि कोन कहली यूएसए रे इंडियन एम्बासी अछि एम्बासी भीतर जदि किछि इकोनॉमिक एक्टिविटी हुए then that will come under the economic territory of India. So this is not geographical territory, rather it is the economic boundary. Who boundary? Economic boundary. So economic boundary India बाहर मध्य हेई पारे कोन कहली इकोनॉमिक बाउंड्री इंडिया रा बाहर मध्य हेई पारे तो आको कहिला हमें बाउंड्री ऑफ अ नेशन नाउ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड नाउ दिस पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर एग्जांपल कोन मु कहि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ये केबे स्टार्ट हो ये स्टार्ट होला 1 अप्रैल 2025 रु एवं एंड हो केबे ना 31 मार्च 2026 बुझिला 1 अप्रैल 2025 रु स्टार्ट हैला एवं एंड होला केबे ना 31 मार्च 2026 रे ये एंड हो अब पहले फाइनेंशियल ईयर ताला फाइनल समेशन पढिलो ये डेफिनेशन ना ये कहूची मॉनेटरी वैल्यू कहार मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन कहली monetary value of all final goods and services कोडी प्रोड्यूस is produced within the economic boundary of a country kebe na in a financial year in a particular period in a financial year that is called as GDP ताको हमें gross domestic product बोली कहू now clear what is GDP gross domestic product next concept को आसिया gross domestic product पर now GDP minus consumption on fixed capital माने करो मो किनी छि गोटे कार 5 लाख रे ताको यूज कला पर ताको बिक्री कर देली 5 लाख रु कम रे बिक्री करबी ना 5 लाख रु अधिक रे बिक्री करबी
5 लाख रे गोटे कार किनिची ताको बिक्री कली कम रे ना अधिक रे करी 5 लाख रु कम रे करी ना काहे कली 5 लाख रु कम रे हां सर्विस भी इंक्लूडेड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कहलिबा बोथ इंक्लूडेड तो कहते कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल सिद्धांत प्रणाम सिद्धांत कुमार तो कौन कहते तो कहते कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल कहीं वियर एंड टियर वैल्यू कहते ताको डेप्रिसिएशन कहते कौन कहते वियर एंड टियर वैल्यू बा ताको कहते कोन दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन हैला कथा बुझेला वियर एंड टियर वैल्यू कोन बा डेप्रिसिएशन कोन वियर एंड टियर वैल्यू और दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन कोडा कंजप्शन ऑन जहा को सीएफसी कहउजो बा जहा को कंजप्शन ऑन फिक्स्ड कैपिटल कहउजो सो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी कहीं ना ऑलरेडी पढ़ी सारी ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस हेले नेट हुए ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस हेले नेट हुए इति से आला जीडीपी रु डेप्रिसिएशन माइनस हला परे हमको नेट मिलेगा क्लियर जीडीपी कोन तापर आसे जीएनपी और एनएनपी इनकम मेथड रे कैलकुलेट कर देखो नाउ हम जो जीडीपी कैलकुलेट करे इंडिया रा इकोनॉमिक टेरिटरी भीतर कैलकुलेट करे हम तो सिटीजनशिप वाइज देखिले माने कर गोटे फॉरेनर यूएस रो लोक आसी इंडिया रे काम कला चाइना रो लोक आसी इंडिया रे काम कला एंड ऑफ द डे से माने इनकम को नेकी ताका कंट्री को पड़े बा गोटे इंडियन यूके रे काम करूची गोटे इंडियन साउथ अमेरिका रे काम करूची बा इंडियन चाइना रे काम करूची एंड ऑफ द डे से माने इंडिया को टंका आनी के त माने इंडिया को एते दी प्रकार रो इनकम आसुची हम देखिले गोटे हला इनफ्लो इंडिया को आसुची आ गोटे आउटफ्लो इंडिया रो बाहर को जाउची तो याको माइनस कर देले हमको मिले कोन ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कौन मिले ना हमको मिलिबो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कौन मिले इनफ्लो माइनस आउटफ्लो दिस इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड केते इनफ्लो और आउटफ्लो टा को माइनस कर देल सिंपल कथा ताले एठी जदी जीडीपी रे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जदी हम ऐड कर दोचे ताले हमको मिलिबो कोन ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो एठी दीटा टर्म को ध्यान देबे एठी हला कोन ना डोमेस्टिक आ एठी हला कोन आ गोटे टर्म जानले हम ना नेशनल गोटे हला डोमेस्टिक आ गोटे हला व्हाट इज डोमेस्टिक एंड व्हाट इज नेशनल डोमेस्टिक माने इनसाइड द कंट्री हम देखले नेशनल मींस सॉरी हां डोमेस्टिक माने एटा गोटे जियोग्राफिकल टेरिटरी एटा गोटे टेरिटरी रो कथा हम कहउची जियोग्राफिकल टेरिटरी कथा कहउची ना एठी कोन कहउचे नेशनल ले और एठी कोन कहउचे नेशनल ले बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री बाय द citizens of a country. Now sound clear? I can see the student view sound clear. Only one sound clear. Sound all clear. Okay. Now it is clear what is GNP. Since the GNP ru depreciation minus kale tumku malibo NNP net national income. अच्छा net national product. क्लियर तल चारिटा जिनस आमे बुझिले कोन कोन जीडीपी कोन जानिले देन जीएनपी कोन जानिले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देन एटू जानले कोन एनडीपी कोन जानले ना गोटे एनएनपी कोन भी ए चारिटा फैक्टर हम बुझिले तल देखलो जीडीपी रु एनडीपी केमते हला तो माइनस करछे डेप्रिसिएशन जीएनपी रु एनएनपी हला केतो ना माइनस करछे डेप्रिसिएशन जीडीपी रु जीएनपी के तळे तो प्लस करछे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड
एनडीपी रु एनएनपी केतेବେଳେ होची ना ऐड करछ हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्लियर क्लियर तले एटी गोटे पॉइंट कहबी जेतेବେଳେ आरो रो सेम डायरेक्शन ने जाउछंती ऐड करिवे लेखि के रखन आरो रो सेम डायरेक्शन ने गले ऐड हबो आरो रो अपोजिट डायरेक्शन ने गले माइनस हबो दिस इज द फार्मूला आरो रो सेम डायरेक्शन ने गले ऐड हबो अपोजिट डायरेक्शन ने गले माइनस हबो एग्जांपल हबो मन कर आपण जाउते एनडीपी रु एनएनपी ताले केम जे एमती एनडीपी रु एनएनपी आरो रो सेम डायरेक्शन ताले ऐड करिवे एनडीपी प्लस कोन अछि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल्स टू व्हाट ना इक्वल्स टू एनएनपी इक्वल्स टू एनएनपी नाउ आरो रो अपोजिट मन कर एनएनपी रु जिबा हमें जीएनपी एनएनपी रु जीएनपी जिबा ताले कोन हबो ना एनएनपी अपोजिट रे जाउचे ई आरो रो ताले माइनस करिया माइनस एटी अछि कितना माइनस डेप्रिसिएशन माइनस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू जीएनपी ताले एटा कोन हबो ना ऐड हे जिवो एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन is equals to GNP. NNP plus depreciation equals to GNP. Now clear? पूरा मन नहीं गला? चलो मत कुआ बेनी जीडीपी रे कौन कले हमको एनडीपी मिलियो जीडीपी रु एनडीपी केमती पाइबा हमें को कौन हेची चेंज एटी देखो प्रथम समस्त कहिवे वेरी गुड सुभाषिस डेप्रिसिएशन माइनस हो अन्य माने समस्त कहंतु अन्य माने समस्त कहे कौन इन नॉट बोल डेप्रिसिएशन माइनस एठी पाइले कौन एठी पाइले हमें क्रॉस एटू कौन करे ना माइनस कर दो डेप्रिसिएशन हम कौन दबो ना एनडीपी सिंपल जिनिस नेक्स्ट जीएनपी रु एनएनपी जीएनपी रु एनएनपी केमती मिलियो it is same minus depreciation next GDP ru GNP next GDP ru GNP एटी डोमेस्टिक रु कोन खाली कोन चेंज हे जाएगा देखो एटी डोमेस्टिक थिला डोमेस्टिक रु एटी कोन हेची ना नेशनल हेची ताले कोन करिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड
सरला कथा डोमेस्टिक रु नेशनल लेछि ना एनडीपी रु एनएनपी कौन चेंज है आगे देख डोमेस्टिक रु एटी भी नेशनल एज एटी थिला डोमेस्टिक एटी डोमेस्टिक रही नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एटा समस्त करिवे फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस कौन कला हो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस सीधा एनआईटी ऐड कर दो एते कथा कहीं लिखुछ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कहीं लिखुछ सीधा डायरेक्ट एनआईटी ऐड कर देले होबनी शॉर्टकट तक लिख परियो प्लस एनआईटी then GDP at factor cost to GDP at market price GDP at factor cost to GDP at market price कौन हम सेम है खाली फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस ही है तो एटी सेम जिनस एनआईटी ऐड हम कौन हम एटी एनआईटी एटी खाली गोटे ऐड हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस कौन चेंज है देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन आग कौन चेंज है देख डोमेस्टिक रु नेशनल नहीं कि डी रु डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट देन फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस दीटा कथा डोमेस्टिक रु नेशनल करिया पई हेले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हबो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस करिया पले एनआईटी ऐड हबो सरला कथा क्लियर तो रिसेंटली किसी चेंजेस है एथिरे बेस ईयर निया जाउची 2004-5 थिला पूर्वरु एबे निया जाउची 2011-12 हेडलाइन ऑफ द ग्रोथ रेट केते ग्रोथ रेट रो हेडलाइन होची जीडीपी एट कांस्टेंट फैक्टर कॉस्ट टू जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस सेक्टर वाइज डेटा को जीवीए होची ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए कोन जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए रे तब एस्टिमेट करा होची
ना जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड करेंट प्राइस गोटे छोट एग्जांपल देखुची देखिबा इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्राइस यूनिट नंबर ऑफ प्रोडक्शन मन कर नेली 20 टा प्राइस नेली मन कर लेट्स से गोटे ईयर नै जो हमें लेट्स से नै जो 2010 2020 नंबर ऑफ प्रोडक्शन 20 प्राइस मन कर थिला ए समय 50 रुपीस पर यूनिट ताल जीडीपी केते हे जो ना 20 into 50 हजार 2020 रे मन कर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हे जे 15 टा प्राइस प्राइस आर लेट्स से बॉडी के जे केते ना 100 टका जीडीपी केते हे गला ना 15 into 100 1500 देखले 2020 रे 2010 अपेक्षा जीडीपी अधिक कि नहीं जीडीपी ऑफ 2020 more than GDP of 2010 but actual production कोडी 2010 रो प्रोडक्शन केतरा है 20 टा इट्स मोर देन 2020 रो प्रोडक्शन 15 2020 रे प्रोडक्शन कम अछि 20 रु 15 बट प्राइस बढ़िवा कारण जीडीपी बढ़ी छै नॉट एक्चुअली प्रोडक्ट बढ़ी छै प्रोडक्शन बढ़ी छै बुझियला कोन कहले एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ीनी रादर प्राइस बढ़िवा कारण जीडीपी बढ़ी छै यदि एई प्राइस रे हमें एठी कैलकुलेट करबा जीडीपी देखन 50 टंका रे यदि हमें एठी जीडीपी कैलकुलेट करबा ताले 15 into 50 केते हिजो 750 टंका जीडीपी हिजो ना 750 एठी अछि केते 100 देखो लेस हे बट एठी 1000 आसिया पछरे कारण कोन ना इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 50 to 100 कोन कहली इंक्रीज इन प्राइस 50 रु 100 हे जाई सेट पई एटा अधिक आसला इज दैट क्लियर एको कुहा जाए जीडीपी एट करंट प्राइस आ गोटे हला जीडीपी एट करंट ईयर गोटे आ गोटे कहजे बेस ईयर सो 2010 को मन कर हम नेले एटी केते लेट्स से दिस इज द बेस ईयर दिस इज द करंट ईयर now जीडीपी कैलकुलेट करूचे दीटा ईयर रे कैलकुलेट करि परिबा करंट ईयर रे कैलकुलेट करि परिबा एवं बेस ईयर रे कैलकुलेट करि परिबा ना करंट ईयर रे कैलकुलेट करले के कोन हबो जीडीपी एट करंट ईयर रे कैलकुलेट करले ताको कहा जाए नॉमिनल जीडीपी नाउ बेस ईयर रे कैलकुलेट करले ताको कहा जाए कोन रियल जीडीपी बेस ईयर रे कैलकुलेट करले ताको कोनती रियल जीडीपी नाउ क्लियर yes Subhasis this is not real growth you calculate the inflation then calculate it बुझेला तल दीटा कथा कहली गोटेला नॉमिनल जीडीपी आ गोटे हला रियल जीडीपी देखो नॉमिनल जीडीपी आ गोटेला रियल जीडीपी so nominal GDP divided by real GDP into 100 is equals to GDP deflector it will give you the value of GDP deflector this will give you the value of GDP now clear what is GDP deflector है देखो चल जीडीपी डिफ्लेक्टर ये क्वेश्चन दबो जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लुएंसा जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू calculate inflation is this correct answer yes it is correct बुझिए now ये गला नेशनल इनकम सो नेशनल इनकम पर आउ केतरा क्वेश्चन को केतरा पॉइंट पूछ नेक्स्ट नेशनल इनकम बढ़िला नेशनल इनकम इंक्रीज होवा को कहला कना जीडीपी इंक्रीज होउची जीडीपी इंक्रीज होउची नेशनल इनकम इंक्रीज होवा को जीडीपी इंक्रीज होउची बोले कहला ना आउ गोटे हला इडी आउ आको कहला कना ग्रोथ
देखो ये ग्रोथ कथा कहूँ एटा गोटे एटा आसी बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी को आसी एटा गोटे बायोलॉजिकल साइंस रो टर्म यार अर्थ किसी गोटे इनक्रीज हवा को ग्रोथ कहा जाए देखा मिलला अनेक कंट्री को जीडीपी बढ़ुची नेशनल इनकम बढ़ुची बट से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ुनी स्पेशली ओईसीडी कंट्रीज बा मिडिल ईस्ट कंट्रीज ओईसीडी कंट्री एई मान को केस रे देखा मिलला कि जीडीपी इंक्रीज होउची बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नॉट इंक्रीजिंग इंक्रीज होउनी बुझे लगे नहीं ओईसीडी कंट्री रे जीडीपी इंक्रीज होउची स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोन होउची स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो नाही सेति में आउ गोटे कांसेप्ट आसला जहा को जाय कोन डेवलपमेंट डेवलपमेंट ना प्रॉब्लम कोन डेवलपमेंट रे ना हाउ टू कैलकुलेट डेवलपमेंट and definition of development now definition of development रे प्रॉब्लम कोन now development रो meaning is different for everyone तुम पाई development रो meaning जहा मो पाई सेम नुहे different नहीं पाए और डॉक्टर पाई जहा कोई इंजीनियर पाई सेम बुझे so meaning is different development रो meaning different now calculate केमति करबा ना calculate करिया भी different so finally 1990 रे UNDP solved this problem UNDP गोटे concept आला जहा कहला HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP ए कांसेप्ट आनिला एवं डेवलपमेंट को कैलकुलेट कला कोन कोन नेला ना तीनटा फैक्टर नेला एठी हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तार एवरेज बाहर करला बाय 3 जहा मिले तब कहला HDI नाउ गोटे कंट्री केबे भी कहबोनी कि मु डेवलप्ड बट मोर हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रो वैल्यू खराब सो प्रत्येक कंट्री दे एक्सेप्टेड दिस वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट HDI को समस्त एक्सेप्ट करे HDI nowadays it is accepted value now clear what is HDI so human development index किया आनिला ना by UNDP United Nations Development Program बुझे गला नेक्स्ट अब केतरा छोट छोट शॉर्ट प्रिलिम्स पाई कोई कुछ फैक्ट national income in India it is estimated through production and expenditure method it is prepared by कौन देखला prepared by then there is a book known as Capital and Growth this book was written by Sir John Rickard Hicks national income it was calculated by for the first time it was calculated by whom by Dadabhai Naoroji by whom by Dadabhai Naoroji now poverty and non-British rule in India this book is written by again by Dadabhai Naoroji clear written by whom now ये ला किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको मन रखिबे नाउ जीडीपी और जीएनपी भीतर कोन फरक देखले हमें जीडीपी रे हमें देखले वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस कोठी प्रोडक्शन होउची जीएनपी रे देखले हु प्रोड्यूसेस इट इंडियन और फॉरेनर इंडियन और फॉरेन जीडीपी रे हमें देखले कोन वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन इंडिया और इन फॉरेन इन इंडिया और in foreign this is the difference between GDP and GNP chalo next so national income divided by population of a country ताको हम कहउछे पर्सनल इनकम कोन पे national income by population of a country that is called personal income now ये पर्सनल इनकम रू माइनस कर देबे टैक्स पर्सनल इनकम माइनस टैक्स जेति कि दोचंदी जहा मिलियो ताको डिस्पोजेबल इनकम now disposable income कोन the income which you can save and spend जहा को सेविंग करि परिबे एवं जहा को स्पेंडिंग करि परिबे ताको डिस्पोजेबल इनकम पर्सनल इनकम रो टैक्स ताको माइनस करिया अछि खाली माने कर मु इनकम करी लाख टका now I cannot use 1 lakh rupees I have there is statutory deduction अछि what is statutory deduction किछि अमाउंट मोर कटि जियो हैला और किछि अमाउंट टैक्स आकार रे कटि जियो so 1 lakh minus
10,000 less say 90,000 is the disposable income. Here what is national income and all those. ठीक अच्छे ताले आज क्लास एतिक था एटा कहली ऑलरेडी बेस ईयर रो वैल्यू चेंज होईची देन हां आ गोटे पॉइंट जीडीपी माने मोर प्रोडक्शन more the production more is the industrialization more industrialization more is the impact on the environment मन कर हमें देखिले जीडीपी रो वैल्यू अछि ए वर्ष 1000 कोटी एनवायरमेंटल डैमेज जदि मु कैलकुलेट करिवि ये प्रोडक्शन करिया पे हिटी लेट्स से 200 कोटी ताको माइनस कर देबी बळिला केतना 800 कोटी this 800 crore is called environment is called green gdp कौन this is called green gdp so green gdp is gdp after adjusting the environmental value और एटा after adjusting the environmental value ताले बेस ईयर टाइप केते निया जाउची कहली 2004-5 2004-5 ठीक अछि क्वेश्चन अछि एटी करियो क्वेश्चन अछि नि जे करियो समझ आछि देखिबा नेक्स्ट क्लास रे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन और देखिले ताले हम आज रे क्लास रे नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक अछि दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट अब हमें नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास तो काली नहीं देखियो चेक करियो समस्ते जते बेले भी आसीबो मो क्लास 9 टा रे ही आसीबो जते बेले भी आसीबो 9 टा रे आसीबो एई प्लेलिस्ट को जिवे प्लेलिस्ट रे देखियो अनेक गुडे वीडियो अछि जोटी मोई लाइव क्लास रो रिकॉर्डेड सेशन जोटी इकोनॉमिक्स रो ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड ठीक अछि पुनी आगो को डिस्कस करबे आ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आज पई थैंक यू गुड नाइट